शवलिंग हो या ट्रैश का इधर हो या कुछ रेनोवेशन हो, तो प्रभु जी जो है सबसे आगे रहते हैं। संकीर्तन में भी अभी भी कई बार प्रभु जी अकेले भी चले जाते हैं। तो बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु जी का संग हमको प्राप्त हो रहा है। तो 20 साल प्रभु जी गीता नगरी में भी रहे हैं। गीता नगरी एक फार्म कम्युनिटी है, ईस्ट कोस्ट में एक फार्म कम्युनिटी है बड़ा। वहाँ पे प्रभु जी ने सेवा दिया है और अभी बॉस्टन में ही स्थित है प्रभु जी। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, प्रभु जी आए हैं हमारे साथ। और प्रभु जी का चेतना जो है, प्रभु के रूम में 24 घंटा प्रभुपाद जी का कीर्तन या लेक्चर चलता रहता है। तो प्रभु जी हमेशा प्रभुपाद के सानिध्यता में रहते हैं और उनकी सानिध्यता में हमें भी जो है प्रभुपाद की चेतना में इतना ओतप्रोत रहते हैं और प्रभुपाद के मिशन में। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे छोटे सेंटर में आए हैं। और आज हमें प्रभु जी के श्रीमुख से जो है कृष्ण कथा और प्रभुपाद जी की वाणी जो है सुनने को मिल रहा है, अवसर प्रदान हो रहा है। तो आइए प्रभु जी का स्वागत करते हैं 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। Hare Krishna, thank you for your warm welcome. And it's a great honor to be here with all the devotees here in Calcutta ISKCON. And Mukunda Lila and Mother Devahuti, they took me to the Ultadanga today where our Prabhupada met his Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, and the very place where I've read about it many times and heard about it, but when you're there, it's. I don't know how many of you have been there, probably most of you, but or maybe all of you. But it's a fantastic place, and it's if you can't be humble, if I can't be humble anywhere else, at least you can be humble when you're there, because it's this is where everything began, where ISKCON began, where Prabhupada met his spiritual master. And it's a miraculous place of pilgrimage especially for everyone, but especially for all the ISKCON followers. And should I be stopping? Or? Yeah, I'll translate. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि आज हम श्रील प्रभुपाद जी जिस स्थली पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से प्रथम बार मिले थे और श्रील प्रभुपाद जी का तो भक्ति का जो मिशन है वो प्रारंभ हुआ था, या तो उल्टा दंगा जंक्शन पे जो हमारा इस्कॉन का मंदिर है उधर जाके आए। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि वो उसके बारे में उन्होंने हमेशा सुना है, पढ़ा है, लेकिन आज उनको वो जगह साक्षात्कार जहाँ पे प्रभुपाद जी जो है उनके प्रभुपाद जी अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को भी प्रभुपाद बोलते हैं, तो उनसे उनका भेंट हुआ और हमारा जो इस्कॉन का आंदोलन है उसका प्रारंभ हुआ। तो वो एक ऐतिहासिक तीर्थस्थली है जहाँ पे हमारे आचार्यगण
हमारे आचार्यगण का जो है हृदय और उनका ना वो आचार्यगण का वो स्थली है। प्रभु जी बोल रहे थे दुनिया में कहीं पे भी यदि विनम्र नहीं होंगे, कम से कम उस जगह में जाके हम विनम्र हो सकते हैं कि वहाँ पे इतना ऐतिहासिक आंदोलन जो है उसका प्रारंभ हुआ था। तो ये बड़ी कृपा की बात है। Okay, so we'll read in chapter 7, text 1 of the Bhagavad Gita as it is. And so I'll read through the Sanskrit once and then we'll do it responsively one time. Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Uvacha Maya Sakta Manak Partha Maya Sakta Mana Partha Yogam Yunjam Marashaya Yogam Yunjan Marashaya Asangshayang Samagram Mam Sanchaya Samagram Mam Yata Gyasya Sitach Trinu. Yatha Gnasya Sita Shrunu. And the Supreme Personality of Godhead said, "Now hear, O son of Pritha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt." And repeat after me. The Supreme Personality of Godhead said, The Supreme Personality of Godhead said, "Now hear, O son of Pritha, now hear, son of Pritha, how by practicing yoga how by practicing yoga in full consciousness of me, in full consciousness of me, with mind attached to me, with mind attached to me, you can know me in full, you can know me in full, free from doubt." free from doubt. So it's a long purport. Should I just read like a paragraph at a time and then you translate it? What can be done, Prabhu? If you like, you can read the whole purport, and I will just give a paraphrases of that. So read through the whole thing. And Okay. I can give a summary of that. Okay. So read the Prabhupada's purport. In this 7th chapter of Bhagavad Gita, the nature of Krishna consciousness is fully described. Krishna is full in all opulences, and how he manifests such opulences is described herein. Also, 4 kinds of fortunate people who become attached to Krishna, and 4 kinds of unfortunate people who never take to Krishna are described in this chapter. In the first 6 chapters of Bhagavad Gita, the living entity has been described as non-material spirit soul capable of elevating himself to self-realization by different types of yogas. At the end of the 6th chapter, it has been clearly stated that the steady concentration of the mind upon Krishna, or in other words, Krishna consciousness, is the highest form of all yoga. By concentrating one's mind upon Krishna, one is able to know the absolute truth completely, but not otherwise. Impersonal Brahmajyoti or localized Paramatma realization is not perfect knowledge of the absolute truth because it is partial. Full and scientific knowledge is Krishna, and everything is revealed to the person in Krishna consciousness. In complete Krishna consciousness, one knows that Krishna is the ultimate knowledge beyond any doubts. Different types of yoga are only stepping stones on the path of Krishna consciousness. One who takes directly to Krishna consciousness automatically knows about Brahmajyoti and Paramatma in full. By practice of Krishna consciousness yoga, one can know everything in full, namely the absolute truth, the living entities, the material nature, and their manifestations with paraphernalia. One should therefore begin yoga practice as directed in the last verse of the 6th chapter. Concentration of the mind upon Krishna, the Supreme, is made possible by a prescribed devotional service in 9 different forms
of which Shravanam is the first and most important. The Lord therefore says to Arjuna, touch Chinu, or hear from me. No one can be a greater authority than Krishna, and therefore by hearing from him, one receives the greatest opportunity to become a perfectly Krishna conscious person. One has therefore to learn from Krishna directly or from a pure devotee of Krishna, and not from a non-devotee upstart, puffed up with academic education. In the Srimad Bhagavatam, this process of understanding Krishna, the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, is described in the second chapter of the first canto as follows. I'm just going to read the English translation to these 5 verses. To hear about Krishna from Vedic literatures, or to hear from him directly through the Bhagavad Gita, is itself righteous activity. And for one who hears about Krishna, Lord Krishna, who is dwelling in everyone's heart, acts as a best well-wishing friend and purifies the devotee who constantly engages in hearing of him. In this way, a devotee naturally develops his dormant transcendental knowledge. As he hears more about Krishna from the Bhagavatam and from the devotees, he becomes fixed in the devotional service of the Lord. By development of devotional service, one becomes freed from the modes of passion and ignorance, and thus material lusts and avarice are diminished. When these impurities are wiped away, the candidate remains steady in his position of pure goodness, becomes enlivened by devotional service, and understands the science of God perfectly. Thus, Bhakti Yoga severs the hard knot of material affection and enables one to come at once to the stage of Asangshayam Samagram, understanding of the Supreme Absolute Truth Personality of Godhead. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2. Those are verses 17 through 21. And that chapter of the Bhagavatam, the first canto, chapter 2, is a chapter that's full of important, those very frequently throughout his lectures and throughout his purports. So, and when Prabhu, the Markandeya Bhajan, Mahesh Prabhupada was coming to America, and that song also refers. yeah, he wrote the Markina Bhagavad Dharma. He included those verses. Okay. Therefore, only by hearing from Krishna or from his devotee in Krishna consciousness can one understand the science of Krishna. तो आज हम 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे पार्थ पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन में मुझको आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि कैसे ये 7वें अध्याय में वर्णन किया गया है कि हम कृष्ण भावनामृत को का प्रकृति क्या है, क्या स्वभाव कैसा है और कैसे उसको अर्जन कर सकते हैं। हम भगवत गीता तो इधर 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से 4 प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो कृष्ण भावनामृत को ले सकते हैं और कैसे 4 प्रकार की प्रवृत्तियां जो हैं जो हमको कृष्ण भावनामृत से दूर ले जाती हैं। ये 7वें अध्याय में इसका चर्चा आता है। अभी भगवत गीता के अध्याय 1 से 6 तक हम ये समझते हैं कि हमको ज्ञान होता है, हम जानते हैं, हम सीखते हैं, पढ़ते हैं चिन्मय आत्मा के बारे में कि आत्मा चिन्मय है और आत्मा जो है भौतिक नहीं है। तो अभी वो आत्मा का जो
तो आगे छठे अध्याय के अंत तक भगवान बोलते हैं कि सर्वोच्च योग है कृष्ण भावनामृत में अपने चित्त को केंद्रित करना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमने कि भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्तित्व है, और जो ब्रह्मन या परमात्मा का ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान है। तो जो भक्ति मार्ग को पकड़ लेता है, अर्थात कृष्ण भावनामृत के कृतियों को, कार्य कृतियों को अपने जीवन में अपना लेता है, ऐसे व्यक्ति को, जिसको भगवत तत्व का या भगवान के व्यक्तित्व तत्व का ज्ञान हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मन और परमात्मा का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं तो भक्ति में किस प्रकार से चित्त को केंद्रित किया जाए, ये छठे अध्याय के अंतिम यानी कि 47वें श्लोक में आता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसके लिए हमको ये भक्ति के नवविधा कार्य कृति जो है उसको अपनाना आवश्यक है, जो नवविधा कार्य कृतियां हैं। तो इसके लिए प्रेरणा हमको मिलता है, या तो हम भगवान से जाने भक्ति का तत्व, या फिर भगवान के शुद्ध भक्तों से जाने, और किसी बाह्य रूप से या बाह्य रूप से भक्ति के ज्ञान का जो है दिखावा करने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से जानने से, पढ़ने से फायदा नहीं है, सीखने से फायदा नहीं है। भगवान का भक्त, उन्हीं से हम सीख सकते हैं। तो भगवान को जानने की विधि जो है वो श्रवणम से प्रारंभ होती है। ये नवविधा भक्ति में श्रवण की अवस्था को जो है जोर दिया गया है। इसीलिए भगवान यहाँ पे भी 7वें अध्याय में बोल रहे हैं तत् श्रृणु। तो अभी श्रीमद् भागवतम के तो इधर आगे 5 श्लोकों का वर्णन आता है भागवतम के प्रथम अध्याय के, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 17 से 21 श्लोक जो वर्णन आता है। ये प्रभु जी बता रहे थे कि ये श्लोक जो है, ये जो दूसरा अध्याय है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों का संग्रह है, जो कि भक्ति तत्वों के बड़े गूढ़ रहस्य बताते हैं। और इन गूढ़ रहस्य को श्रील प्रभुपाद जी अनेक अपने प्रवचनों में भी बार बार कोट करते हैं। और चर्चा आ रही थी कि प्रभुपाद जी जब बोस्टन हार्बर गए थे, तो जब उनकी प्रार्थना थी भगवान के लिए, उसमें भी ये श्लोक का वर्णन आता है कि कैसे ये कृष्ण का श्रवण करने से जो है हमारे हृदय के अभद्र दूर हो जाते हैं, हमारे हृदय के अभद्र दूर हो जाते हैं। तो जो भी जितना भी हम कृष्ण कथा को भक्तों के से अधिक सुनेंगे, उतना ही भगवत भक्ति में हम स्थिर हो जाते हैं। अंततः श्रील प्रभुपाद आगे तात्पर्य का अंत कर रहे हैं, बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से या कृष्ण भावनामृत भावना भावित भक्तों के मुखों से यदि हम कृष्ण भक्ति को सुनेंगे तो कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। Okay, so the whole point of the Bhagavad Gita as it is that we are trying to know Krishna. Everyone knows Krishna, but we've forgotten Krishna. Everyone has dormant love for Krishna in his heart, in our hearts, but we've forgotten. And so the process of yoga, like in English, it's yoke. It's a big, heavy wooden thing like this that you put on the necks of 2 horses or oxen to pull a plow. So you link them together so they can work together to pull the plow. And so that word yoke comes directly from the word yoga. Everyone knows yoga these days, and all over the world, people go to yoga studios, and mostly for physical exercise, to have a beautiful body. But the word yoga means to link with Krishna, link with God. And in our ordinary experience, in our everyday life, everyone knows that there's only one way to link with anyone in any relationship. And Krishna says in Bhagavad Gita, only
only by devotional service can I be known, standing before you as I am. And he says, because you're my devotee as well as my friend. To Arjuna, I'll explain this to you. So we know that the only way to know anybody is to show them some devotion, some love. Depending on how close the relationship is, in a business relationship, you don't have to show much love, but you have to show something. And with your friends, depending on, casual friend or a closer and closer friend, you have to show more and more love, devotion to them. In marriage or very close family relationship, there has to be a lot of love and trust and devotion. Otherwise, no one will reveal themselves to anyone. You may externally be nice to someone and yeah, okay, good, but nobody reveals their innermost feelings and desires and thoughts and personality to anyone else unless there's devotion between them. It's the only way to get to know anyone. Even a dog or a cat or a horse, you have to show some devotion, some love. And so it's very easy to understand why Krishna says, only by devotion can I be known, standing before you as I am. There's no, Krishna's like, everyone, we're all exactly the same. You want to know me? You want to be my friend? You want to be my wife? Or you're my close relationship with me? It's okay. You seem like a nice person. So let's talk. Let's get to know each other. And but there has to be a development of exchange of feelings, love, devotion. Otherwise, you'll never reveal yourself to anyone, and they won't reveal themselves to you. And Krishna we're like that because Krishna's like that. We're like Krishna in that our desires, our thoughts, our feelings, our love, our devotion, we're shaped in this way by Krishna as his parts and parcels. प्रभु जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो स्वाभाविक रूप से है, लेकिन उसको जागृत करने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पे योग के बारे में बताया जा रहा है। योग के माध्यम से, योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, लिंक करना बोल रहे थे प्रभु जी, जोड़ना। तो प्रभु जी बोल रहे थे इसी शब्द से अंग्रेजी में एक शब्द आता है योग। जैसे दो बैल को एक आपस में जोड़ देते हैं तो फिर वो हल को जोतते हैं, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं योग, अर्थात जोड़ देना। तो ये जो शब्द योग है, ये योगा शब्द से ही आ रहा है, अर्थात जुड़ना। तो हम भगवान के साथ कैसे जुड़ सकते हैं उस संबंध में, वो घनिष्ठता में, उसके लिए भगवान बता रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, कि केवल मेरा एक भक्त जो है, जो भक्ति भावना से मेरे पास आता है, वही मुझे जान सकता है। प्रभु जी बता रहे हैं कि ये देखिए, ये भावना तो हम सबके अंदर इस प्रकार की भावना होती है कि किसी को भी हम तभी अपने बारे में बता सकते हैं, अपनी इच्छाओं के बारे में, अपने हृदय के बारे में, जब वो जो है हमारे प्रति कुछ प्रेम की भावना, कुछ सेवा की भावना जो है व्यक्त करते हैं। वो प्रेम या सेवा की तो किसी भी रिश्ते में, मैत्री में भी थोड़ा सेवा भाव रहता है, थोड़ा एक दूसरे के प्रति जो है थोड़ा अफेक्शन का भाव है, थोड़ा प्रेम का भाव है। एक बिजनेस रिलेशनशिप में एक कंसर्न का भाव होता है, एक
कंसर्न, चिंता का, दूसरे व्यक्ति के का शुभ चिंता का जो भाव होता है, तो इस भाव के बिना कोई भी संबंध नहीं होता है कि कोई भी हमें से कोई भी अपने बारे में, अपने हृदय के बारे में किसी को भी इस प्रकार से प्रकाशित नहीं करेगा जब तक कि हम ये भाव नहीं देखते हैं, प्रेम का भाव या फिर एक शुभ चिंता का भाव। या तो ये हमारा मनोवृत्ति कैसे है, क्योंकि भगवान कृष्ण का भी ऐसे ही मनोवृत्ति है। तो जब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से उनको जाना जा सकता है, हम अपने हृदय में भी देख सकते हैं हमारा भी ऐसा ही स्वभाव है। और हमारा ऐसा स्वभाव क्यों है, क्योंकि कृष्ण का स्वभाव ऐसा ही है। Yeah. Yeah. So, and Prabhupada, that is the only goal of people talk about spirituality, about religion, about yoga, about meditation, about austerities and penance, and so many things that are associated or parts of the spiritual life. But the only purpose of all those different practices of spiritual practices is to come to the point of knowing and loving the Supreme Personality of Godhead, Krishna, because nothing exists except Krishna and Krishna's energies. And we are a part and parcel of Krishna. We are also Krishna's energy, and our eternal relationship is with Krishna. And all the other devotees who serve Krishna together, like in a ISKCON temple, all the devotees serve the deities, serve Prabhupada, serve their spiritual master in a cooperative spirit, working together to serve Krishna, so that Krishna may be happy. And in Goloka Vrindavan, of course, all the gopis, all the cowherd boys, Nanda and Yashoda, and all the residents of Vrindavan, they're all doing their various services every day, and they're all everything in Goloka Vrindavan. And when Krishna was here also, everything is centered around the one purpose of taking care of Krishna. And so our relationship with Krishna is with Krishna and all the other humble servants of Krishna, but that's all centered around the service to Krishna. So there are different processes of yoga. Krishna describes different things to Arjuna in the first 6 chapters of the Bhagavad Gita. But Prabhupada says here in the purport, the Lord therefore says to Arjuna, touch Trinu, or hear from me. No one can be a greater authority than Krishna, and therefore by hearing from him, one receives the greatest opportunity to become a perfectly Krishna conscious being. One has therefore to learn from Krishna directly or from a pure devotee of Krishna, and not from a non-devotee upstart puffed up with academic education. So we don't have to, probably in past lives, we've done all kinds of rituals, all kinds of sacrifices to get to this. And now we're at this point. At this point in this life, we don't have to do any of those things anymore. We can start from the topmost rung of yoga. The topmost rung of the yoga ladder is Bhakti Yoga, and we can start from Bhakti Yoga from the very beginning, just by hearing and chanting about Krishna in disciplic succession, and in that way come to be pure devotees of Krishna. Pure devotee is a term that we use. It's not a light term.
but it's not something that you just throw around like devotee, this pure devotee. No, a pure devotee of Krishna is a very serious term, but there's Kornitai ki jai, Jagannath Baladev Subhadra. There's one place early in ISKCON in like the early 1970s, and someone was asking Prabhupada something, I forget what the question was, but and by night, if it was, let's say it was 1972, and so the oldest devotee at that time was 6 years in Krishna consciousness. The first few devotees came in 1966, and many devotees there were like 6 months or 1 year or 2 years in the temple, 2 years since hearing about Krishna, chanting Hare Krishna, maybe 3, maybe 4 years. And Prabhupada, he said at that time, at this one time, he said, all my disciples are pure devotees. And he said, maybe not so advanced, but they're pure devotees. He meant, by saying that, he meant that the devotees are so sincere and so dedicated to serving Prabhupada that their whole everything, time, energy, money, thoughts, words, deeds, everything was centered around Prabhupada and surrendering to Krishna. So that is in essence, that is what a pure devotee is. And we can all be pure devotees. It's available to all of us. We're all here, we're all chanting Hare Krishna, we're serving faithfully in disciplic succession. Krishna is trying to take us all back home, back to Godhead, to be with Him. He wants us back with Him. That's why He comes. That's why He comes as Sri Chaitanya Mahaprabhu, specifically to bring all of us back home, back to Godhead. Krishna wants us to come home. So we're all eligible to become pure devotees and go back home, back to Godhead. Very, very soon, even in this life. प्रभु जी बता रहे हैं किस प्रकार से सभी प्रकार के योग, तप और सैक्रिफाइस में त्याग, इस सब का उद्देश्य होता है भगवान के प्रति प्रेम का उत्पत्ति। हम जो हैं भगवान कृष्ण के अंश हैं, और इसलिए हमारी अस्तित्व की परिपूर्णता तभी होती है जब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्यरत रहते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। इसलिए भगवान की सेवा करना या भगवान को प्रसन्न करना जो है वो हमारे अस्तित्व की परिपूर्णता का जो है अनुभूति देता है। प्रभुपाद जी इधर तात्पर्य में बता रहे हैं तच्छृणु। तो भगवत गीता में हम देखते हैं कि अध्याय 1 से 6 में भगवान कृष्ण अलग अलग योग के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा भगवान कृष्ण जो है ये भक्ति योग पे जोर दे रहे हैं, और भक्ति का जो सारा सार है वो है श्रवण करने में, तच्छृणु। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं और खासकर भगवान के भक्तों से सुनते हैं, तो हमारे अंदर का जो कृष्ण भावनामृत है वो जागृत हो जाता है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि अभी तो इस प्रकार से हमको तो श्रवण की अवस्था से इस प्रकार से हमारे चिंतन या सेवा की या कार्यकृति की अवस्था आती है कि हमारा चिंतन और कार्यकृति के केंद्र जो है भगवान की प्रसन्नता बन जाता है। 1972 में तो सभी भक्त जो थे वो बड़े छोटे थे। जो सबसे वरिष्ठ भक्त थे उनको 6 साल हुआ था भक्ति में आए हुए, 1972 की जो बात है। लेकिन प्रभुपाद जी उस वक्त बोले
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि हमारे सभी भक्त जो हैं वो सब शुद्ध भक्त हैं। हालांकि इतने उन्नत हो सकता है ना हो, लेकिन शुद्ध भक्त हैं, ऐसा करके प्रभुपाद जी बोले। तो प्रभु जी उसी बात पे आगे समझा रहे थे कि प्रभुपाद जी का भाव क्या था। तो प्रभुपाद जी का भाव ये था कि हाँ, ये भक्त इतने उन्नत नहीं है, लेकिन वो कितना है गंभीर है भक्ति में। अब उनके कार्य, उनका चिंतन जो है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बड़े गाढ़े रूप से, बड़े प्रगाढ़ रूप से जो है केंद्रित है। और प्रभु जी बता रहे थे कि शुद्ध भक्त होने का जो यही मर्म है, शुद्ध भक्त होने का गंभीरता भक्ति में, कि भगवान कृष्ण के सेवा और प्रसन्नता के लिए हमारे कार्य जो हैं और हमारे जो चिंतन है वो जो है केंद्रित होना चाहिए। इसी को शुद्ध भक्त बोलते हैं। प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसे इस प्रकार की भावना से, मनोभावना से और हम आगे चलेंगे तो हम भी अति शीघ्र जो है शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो यही प्रभुपाद जी का भाव था जब प्रभुपाद जी बोले कि हमारे सारे भक्त जो है शुद्ध भक्त, हम भी इसी जीवन में अति शीघ्र शुद्ध भक्त बन सकते हैं। लेकिन ये गंभीरता कि हाँ, हमारे विचार, हमारे कार्यकलाप जो हैं भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए केंद्रित होने चाहिए। And that point about hearing, touch Trinu, is very essential point. Everything that we do is based on hearing. Everything that we learn, everywhere you go to school to hear about whatever subject you're interested in, everyone is always talking and listening to someone about something. So, but hearing about Krishna is in itself service. By just hearing the Bhagavad Gita, hearing the Srimad Bhagavatam, hearing the Kirtan, that is in itself service. You're serving Krishna by hearing. Usually we don't think of listening to somebody as I'm serving you by listening to what you say, but in Krishna consciousness, it's the most first and foremost, the most basic, most important part of devotional service. Shravanam Kirtanam Vishnu, hearing and chanting about Krishna. So Shravanam is the first and most important thing. Everything else is based on that. You can't do anything unless you know what to do. And you learn what to do by hearing from an authority, whatever subject it is. And the same is true in spiritual life also. We know what to do to serve Krishna by listening to Krishna. It's like if I want to know, if I want, you're a friend and I want to know how can I help you and what can I do for you, then you tell me what I can do for you, and then I do it. I have to ask you, what can I do for you? And then I can do it. So it's the same principle in Krishna consciousness. We hear from Krishna. We hear from Krishna's pure representative, from Prabhupada, and then we follow those instructions and we're purified. Also, another thing, just by looking at Krishna, like you look at Lord Chaitanya, Lord Nityananda on the altar, that's service. Looking at Krishna, you're serving Krishna. It's very easy to serve Krishna. Even if somebody is paraplegic, they can still look at Krishna. They can still hear about Krishna. Anyone can serve Krishna in any condition of life, no matter how restricted it is. And most of us, we're not so restricted. Everyone here, we have freedom of movement, freedom to use our senses and our intelligence. So we can take up some service within ISKCON. We take up some service to help the preaching and to take care of the temple. Taking care of the temple is essential. The temple is the center of Krishna conscious life. That's why we're all here. We're here because this is
where people come to hear about Krishna and disciplic success. So taking care of the temple is extremely important service. Yeah, but after hearing and chanting and looking at Krishna, then we should do something practical to serve in ISKCON. प्रभु जी बता रहे हैं कि तो सब कुछ जो है श्रवण पे ही निर्भर करता है। प्रभु जी बता रहे देखो कृष्ण के बारे में सुनना भी एक सेवा है। अब कोई व्यक्ति बोल रहे हैं उनको सुन रहे हैं वो एक तो सुनना भी सेवा है। तो ये बड़ी अद्भुत अनोखा ये एक गुण है भक्ति का। लेकिन ये जो बात आ रही है कि सुनना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि कुछ करने के लिए पता भी तो होना चाहिए क्या करना है, और कैसे पता होगा जब हम एक प्रामाणिक स्तोत्र से सुनेंगे तभी तो समझ में आएगा कि करना क्या है और फिर हम कर सकते हैं। तो किसी भी रिश्ते में कभी हम जाते हैं दूसरे व्यक्ति को संबोधित करते हैं कि हाँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो सुनना जो है वो आवश्यक है। तो इसी प्रकार से जो श्रवणम प्रभु जी बता रहे हैं कि इसी प्रकार से जैसे भगवान कृष्ण को देखना जो है, दर्शन करना, वो भी एक सेवा है। जैसे हमारे मंदिर में इधर भगवान निताई चांद गौर चांद विद्यमान है, तो उनका दर्शन करना भी एक सेवा है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भक्ति जो है कितना सरल है। ये भक्ति इतना सरल है, केवल सुनना और देखना, भगवान का दर्शन करना, वो भी एक सेवा है। तो कितना सरल है कि हो सकता है कि हम जो है देखिए अलग अलग मात्रा में जो है, अलग अलग मात्रा में बंधनों से बाध्य है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना भी बाध्य क्यों ना हो, ये भक्ति का मार्ग कितना सरल है। तो फिर आगे प्रभु जी बोल रहे थे कि श्रवणम कीर्तनम होना चाहिए, और श्रवणम कीर्तन के बाद थोड़ा सेवा की अवस्था भी होनी चाहिए, भगवान की थोड़ा बहुत सेवा। तो चाहे वो बुक वितरण का सेवा हो, प्रचार का सेवा हो, या मंदिर का सेवा हो। प्रभु जी बोल रहे थे देखो मंदिर में सेवा करना आवश्यक है, क्योंकि मंदिर जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है। क्योंकि जो मंदिर है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक केंद्र बन जाता है और एक पोषण का जो है स्तोत्र बन जाता है। इसलिए मंदिर में आके कोई भी सेवा करना जो आवश्यक है। तो श्रवणम कीर्तनम करने से के बाद या श्रवण शिवम करने से जो है ये सेवा का भी भाव जो है हमारे हृदय में संचालित होना चाहिए कि थोड़ा बहुत तो सेवा करना है, कुछ भी। Yeah, just one final thing is that everyone here, first of all, everyone in the human form of life, like in this city of Calcutta, there's about 20 million people, but probably within this one room, there's like more than 20 million tiny little living entities that we can't even see. So 8 billion people on the planet. It sounds like a lot of people, but compared to the number of living entities on this planet in tiny little forms, or plant and animal forms, the fish, everything, the 8 billion people is practically nothing percentage-wise. And so everyone in the human form of life is qualified by being in the human form of life to understand our relationship with God. And then beyond that, everyone here except me is born in India, and in Bharatvarsha is the land of Krishna. And Prabhupada writes in one purport in the Srimad Bhagavatam that to take birth as a human being in the land of India is the highest birth in the universe. So because taking birth in India, everyone has a natural tendency to worship God, and it's a fact. And so we're in the human species, born in Bharatavarsha, and taking part in Lord Chaitanya's Sankirtan movement.
worshiping Radharani and Krishna. So it's like if the lottery, you won like in the United States, they have the big lottery, and sometimes it gets up to $1 billion, and people are and it's like, but to be in this position that we're all in this temple right now, it's like if you won the lottery that was $20 zillion, or you won, this, and that's even a small amount. There couldn't be anybody. There's no possibility of being any more fortunate than we are right now. And Krishna's holding out his hands to us and just saying, "Come on!" And all we have to do is just keep doing what we're doing. Just keep chanting Hare Krishna. Just keep serving Gaurnitai in the temple. Go to Mayapur. Go to Vrindavan. The whole land of India is a sacred land. But within India, of course, there are Mayapur, Vrindavan, so many places. And it's all we have to do is just keep doing what we're doing right now, and just be a faithful servant of Prabhupada, faithful servant of Krishna, and can very easily attain the perfection of life and go back home, back to Godhead. So Prabhupada was urging, begging, pleading with with everyone from the beginning, not even from the beginning of when he came to the United States, but when he was preaching here in India for many years before he left India to go to the United States. He was preaching a lot, as much as he possibly could, to everyone he met. And he just the process of preaching is just to ask everyone, beg them, plead with them to just remember who they are, remember who we are as eternal servants of Krishna, and act like it. Take it up and do it. And do it more and more, and just everyone here is a great soul. Everyone here is in the most fortunate position, surrendering to Krishna. So just keep doing it. Keep doing it. प्रभु जी बता रहे थे, हरे कृष्णा, प्रभु जी बता रहे थे कि देखिए भाई कलकत्ता का जनसंख्या 2-2.5 करोड़ है, लेकिन हम देखते हैं कि इस हॉल में ही 2-2.5 करोड़ जो है जीवात्माएं होंगे, कीटाणु वगैरह सब मिला के यदि गणना करेंगे तो मानव जाति जो है 8 बिलियन है। लेकिन 8 बिलियन जो है संपूर्ण जीवात्माओं का यदि गणना करें उसके सामने बहुत कम है। तो ये जो अवसर, इससे हमको ये इस मूल्यांकन से हमको ये समझना चाहिए कि हमें जो अवसर मिला है वो अत्यंत ही दुर्लभ है। ये जो भक्ति करने का जो अवसर है, भगवान ये श्रवणम कीर्तनम करने का जो अवसर है, ये कितना दुर्लभ है, इस बात पे प्रभु जी जो है जोर दे रहे थे। और फिर प्रभु जी बता रहे थे कि जो भारत का जो भूमि है वो बड़ा पुण्य का भूमि है। तो मानव जाति में जो भारत भूमि में यदि जन्म लेना जो है वो सर्वोच्च जन्म है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से ये भारत भूमि में जन्म लेने से जो है कृष्ण के प्रति जो भक्ति की भावना है वो प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर है। उस भावना को जागृत करना है और ये मौके का लाभ उठाना है। ये अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हमें ये भारत भूमि में जन्म मिला है। प्रभु जी बताए थे, देखिए प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले जो भी भक्तों से मिलते थे उन सबसे ये आग्रह करते थे कि आप जो है इस मौके का फायदा उठाइए और भक्ति भावना को और जो है प्रगाढ़ रूप से जो है अपने जीवन शैली में जो है
उसको इंस्टॉल कीजिए, उसका पालन कीजिए, अपने जीवन शैली में उसको उतारिए। हाँ, तो इसलिए हमें क्या है, हमें क्या चाहिए कि हम जो है श्रवणम कीर्तनम को करते रहें, भक्ति करते रहें, सेवा करते रहें। तो भगवान जो है देखिए, जो जिसने भारत भूमि में खासकर से जन्म लिया है, उसके लिए तो भगवान जो है दोनों हाथ खोल के बुला रहे हैं कि आ जाओ, है ना। भगवान का बड़ा असीम कृपा है। तो हमें केवल ये जो सरल जो कार्यकृति है भक्ति के, श्रवणम कीर्तन में, उसको करना है, करते चले जाना है। तो श्रद्धा के साथ हमें क्या है, ये भक्ति के कार्यकलापों के प्रति जो है समर्पित रहना चाहिए, या है ना दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। और इस प्रकार से हम भक्ति करते रहेंगे। तो बस यही आवश्यक है भगवान के धाम में जाने के लिए और अपने जीवन को जो है परिपूर्ण बनाने के लिए। हाँ, प्रभु जी बोल रहे थे, देखो ये जो अवसर है हमारे पास भक्ति करने का, एक लॉटरी की तरह है। कि मान लो किसी को जिलियन बोल रहे थे प्रभु जी, कितना हो गया, तो खरबों का ना, मान लो दो दो ना दो दो 5 खरब का लॉटरी लग गया, कैसा मनोभावना होगा। लेकिन कृष्ण भावनामृत मिल गया है, भारत भूमि में जन्म मिला है, कृष्ण भावनामृत का अवसर मिल गया है। ये तो खरबों की लॉटरी से भी बड़ा लॉटरी है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो इसलिए भक्ति की भावनाओं में जो है हमको निरंतर लगे रहना है। Does anyone have anything, questions or comments? तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्रश्न या टिप्पणी है तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, टिप्पणी भी कर सकते हैं। हाँ। Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much for this wonderful lecture. Prabhu, in morning lecture, you were telling like how Prabhupada disciples are very obedient to Prabhupada because they have affection for Prabhupada, because they're doing everything because Prabhupada liked it. Prabhu, we may have gratitude to our senior devotees, to Chaitanya Mahaprabhu and Bhagwan Ji, but when it comes to the action, we put ourselves in front instead of their pleasure. So, Prabhu, how can we increase our trust in our senior devotees? Are you going to translate that or? Just asking how to be, Yeah, you are obedient to Prabhupada, so how can we be that obedient to Prabhupada? Yeah. And like we have little gratitude, but we don't have that much affection for Prabhupada. Everything will increase. Everything, that's the benefit of Krishna, the specific value of Krishna consciousness. That just by practicing Krishna consciousness, all good qualities, all devotion, all love, all commitment will increase and increase, and everything negative will decrease and decrease. It's like amazing. It's in any study of any other thing, it's not like that. But in Krishna consciousness, it's exactly like that. All that is by regular attendance in classes on the Bhagavatam, all that is troublesome to the heart will be almost completely destroyed to nil, and transcendental loving service to the Supreme Personality of Godhead will be established as an irrevocable fact. It's a verse from the second chapter of the first canto of Srimad Bhagavatam. And Satchrinvata Sukata. Yeah, so it's not automatic in the sense that you just push a button and everything happens, but it is automatic, and the progress in Krishna consciousness is automatic in the sense that you put some effort into it, and Krishna reciprocates greatly with us. And as he reciprocates, then we
progress, you have to consciously want to surrender. And I know you do, and you're a sincere, surrendered servant of Krishna. And we have to increase our sense of surrender and desire to serve Guru and Krishna. And that's, yeah, so it's not automatic in the other sense, but if we just desire to surrender to Krishna more, and Krishna will show us how, in so many ways, how to surrender, how to be humble, how to do everything in Krishna's service. It will grow and grow and grow. That's guaranteed. And one important word in that verse was, Krishna says, you can know me in full, free from doubt. So in the material world, there's nothing sure in the material world, material activities. We have a saying in the United States, nothing is sure except death and taxes. So that's the material world for you. You're going to get old. You might not even get old, but you're definitely going to leave your body, and you're definitely going to pay taxes along the way. But nothing in the material world is sure. But Krishna assures us that by practice of devotional service, by hearing from him in disciplic succession, we will know him free from doubt. There's no doubt it will happen. It's guaranteed to happen. Krishna can guarantee it because he's God, and whatever he says is going to happen, will happen. तो प्रश्न था कि जिस प्रकार से आप श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित हैं, तो हम भी अपना समर्पण कैसे बढ़ा सकते हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि ये भक्ति का अभ्यास करने से ही समर्पण की भावना में वृद्धि होगी। तो ये ऑटोमेटिक नहीं है, अपने आप कोई स्विच दबाने से या कोई स्विच दबाने से नहीं होगा। भक्ति का अभ्यास करना जो है आवश्यक है। तो लेकिन भक्ति का अभ्यास करना जो है वो निश्चित करता है कि ये जो समर्पण की अवस्था है ये होने वाली है। प्रभु जी बोल रहे थे हमें जो है समर्पण करने की जो इच्छा है उसका वर्धन करना है, उसका वो इच्छा को और प्रबल बनाना है। और वो प्रबल इच्छा जो है अभ्यास में जो है वो प्रबल इच्छा मैनिफेस्ट होती है, प्रदर्शित होती है अभ्यास में। अभ्यास में जप करना, भागवत श्रवण करना, मंदिर में सेवा करना, आना, आरती करना भगवान का। तो इस प्रकार से ये जो कृति है। अब आगे प्रभु जी बताए थे कि देखिए जीवन में ये भौतिक जगत में कुछ भी जो है उसका गारंटी नहीं है, निश्चित नहीं है। जैसे बोल रहे थे अमेरिका में बोलते हैं कि केवल एक मृत्यु निश्चित है और टैक्स देना निश्चित है, नो, जो कर जो है वो देना निश्चित रहता है और कुछ भी निश्चित नहीं है। लेकिन ये अनिश्चित जगत में भगवान जो है एक निश्चित गारंटी दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि आप मेरे भक्ति में कार्यों का अभ्यास करते चले जाइए और मुझे जानना और मुझ तक पहुंच पाना, और वो अवस्था का जो समर्पण का अवस्था है या भक्ति का उन्नत जो अवस्था है वो आना जो है निश्चित है। लेकिन अभ्यास करते चले जाना है, अपनी इच्छा को और प्रबल बनाते हुए अभ्यास करते चले जाना है। हाँ, तो भगवान गारंटी दे रहे हैं क्योंकि वो भगवान है, वो जो बोलते हैं वो हो जाएगा। And just one more thing on that. The main point, a very important point, is that we're the soul, as pure spirit soul, tiny part and parcel of Krishna. It's
our natural position to be humble and to respect our elders. It's not something we have to manufacture. We can work on it consciously, but it's the nature of us as pure spirit souls to be humble, to be submissive, to work hard for Krishna and to serve our spiritual master. It will happen as we're purified, because that's who we are. We are humble servants. We're not these crazy puffed up material, like in the United States. Everyone is like, I think it's definitely worse there than here, but it's a pretty crazy place. But in the United States, everyone is like, it's all about me. What do I want? It's really pretty heavy. And of course, it's like that everywhere in the material world. But that's not our natural. That's not our nature. Our nature is to be tiny. Our nature is to be humble, little tiny servants of Krishna. Prabhupada signed that poem that he wrote, Markina Bhagavat Dharma. He signed it. He wrote that in Boston Harbor when he first arrived, and he signed it, most unfortunate, insignificant beggar. That's how a devotee feels. A pure devotee feels like that. Even Srimati Radharani said in the Chaitanya Charitamrita is no greater. The first Radhastami that was there in 1966 in the United States, Prabhupada said two things about Srimati Radharani that Satsvarup Maharaj remembers. And one is that on Janmashtami we fast till midnight because Krishna is very strong, very tough. But on Radhastami we fast till noon because Radharani is kind. And then he also said Radharani is the best devotee of Krishna because she loves Krishna the most. So of course we all worship Srimati Radharani, and she's Krishna's expansion of Sladini Shakti. And so everyone worships Srimati Radharani, but Radharani herself says that she considers everyone else to be a devotee except her. If that's how Radharani feels, if that's how Prabhupada feels, if that's how Bhaktivinoda Thakur feels, and all the great souls, then we can see it's our natural position to be humble. So it's coming. Don't worry about that. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि तो आत्मा का ये स्वाभाविक ये स्वभाव है, विनम्रता जो है, और दूसरों को आदर देना, ये जो आदर सत्कार की भावना है, विनम्रता की भावना है, ये स्वाभाविकता जो है आत्म तत्व का एक गुण है। तो ये स्वाभाविक है, लेकिन भौतिक जीवन में इस प्रकार से नहीं होता है। प्रभु जी बोल रहे हैं कि जैसे अमेरिका में ये ममत्व की भावना बहुत ज्यादा है, इधर थोड़ा कम है, लेकिन है कि मैं मेरा ही तो वो ममत्व की भावना जो है बहुत ज्यादा प्रचुर है। लेकिन ये जो सेवा की भावना है, सत्कार की भावना, विनम्रता की भावना है, यह आध्यात्मिक जीवन में जो है स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी मार्की ने भागवत धर्म जो उन्होंने कविता लिखा था बोस्टन हार्बर पहुंचते समय, उसमें प्रभुपाद जी लास्ट में अंत में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, भगवान मैं आपका जो है सबसे तुच्छ सेवक हूँ,
इस तरह से लिख रहे हैं। तो उनका भाव कैसा है? बड़ी विनम्रता का भाव है, सभी जीवों को आदर सत्कार देने का भाव है। वास्तविकता में राधा रानी का भी यही भाव है। प्रभु जी बता रहे थे, सतस्वरूप महाराज लिखते हैं कि जब प्रभुपाद जी जन्माष्टमी में कथा कर रहे थे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखिए राधा रानी जो है वो जन्माष्टमी में कैसा है, हम अर्धरात्रि तक जो है उपवास करते हैं, कि राधा अष्टमी में जो है दोपहर 12 बजे तक ही उपवास होता है, क्योंकि राधा रानी जो है ज्यादा कृपालु है। तो राधा रानी का भाव कैसा है? वो अपने अलावा बाकी सबको भक्त मानती हैं कृष्ण का। तो उनको ऐसा है कि सब जो है कृष्ण के भक्त हैं, तो ये उनका भाव है। तो इसलिए ये आध्यात्मिक भाव सत्कार का और विनम्रता का ही होता है। इसीलिए तो ये स्वाभाविक है। इसलिए जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएंगे, हमारा ये जो स्वाभाविक भाव है वो जागृत होता जाएगा। तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ते चले जाएंगे। Anything else? I think we should probably stop pretty soon. और कोई प्रश्न है भक्तों का? पूछ सकते हैं। Everyone just gives from the sky. Namaskar. Thank you for listening. I wanted to ask you, like nowadays we have a focus on chanting of holy names, and this is the process for us. So I wanted to know how during your days when you were new, Yeah. how Prabhupada used to emphasize on this subject, particularly about the quality of chanting, and what was the practice among the devotees, how they were also taking this subject very seriously, that quality of chanting should be good. So during the initial days of our movement. Yeah. I mean, Prabhupada, the first thing he taught was chanting. First thing he taught was kirtan, and then it wasn't long before the devotees started chanting japa. And then at the initiation, the first initiation and second initiation ceremonies in 1966, the first several devotees got initiated, and Prabhupada chanted one round on each of their sets of beads. There were no beads from India. And then Prabhupada sent them to a craft shop, and they all bought these big red, about that size big red beads, and they strung them. They took a long time. They strung them up the way Prabhupada showed them on the string, and then they started. There were no bead bags. Everybody just wore their beads around their necks, and actually when they this is off the point, but the story of how the devotees in San Francisco got the first Jagannath deities. Yeah. It's a wild story, but and then then a lot of them, they started getting little Jagannath deities like that, and they wore them on a chain around their necks, and Prabhupada knew they were doing it, obviously, and he didn't tell them not to. And anyways, the early days, everything was new and innocent, and so the devotees
Prabhupada, at least initially, he didn't get into so many details about exactly how to chant, but he said just chant, just pronounce the syllables of the Hare Krishna Maha Mantra. You just hear and chant, hear and chant. The mind is captured between two senses. When there's two senses working together, the ears and the tongue, then the mind, and also the sense of touch. Is also the japa beads, fingering the beads in your hand while you hear and chant. That's three senses. The mind, that the mind is captured between, and that helps to focus. The whole point is to pay attention to Krishna. It's like if I'm talking to you and I'm looking over here and looking over there, and and it's not a very nice way to talk to somebody. If you want to talk to somebody, you have to pay attention to them. It's really as simple as that. Otherwise, how can you have a quality wives often complain about their husband that he doesn't listen to me. He just listens and I'm talking and he goes, yeah, yeah. And so they don't like that. And understandably so. So Krishna wants us, it's really as simple as that. Krishna wants us to pay attention to him when we're chanting his holy name. He wants us to pay attention to him all the time, but definitely when we're specifically chanting our rounds. Should we stop? Translate. तो प्रश्न ये था कि इस्कॉन के शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद जी ने जपा का जो गुणात्मक रूप से किस प्रकार से अच्छा और अच्छा जप किया जाए उसके बारे में क्या क्या बताया था। तो प्रभु जी बता रहे थे कि शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद जी ने पहले कीर्तन का इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोडक्शन परिचय दिया, कीर्तन का शुरुआत के दिनों में परिचय दिया। उसके बाद जप करना सिखाया भक्तों को। तो फिर दीक्षा के समय की किस प्रकार से 16 माला जप करना है ये बताया। तो प्रभुपाद जी का जो मुख्य जोर रहता था कि कैसे हम जो है एकाग्रता के साथ जप करें। एकाग्रता के साथ शुरुआत के दिनों में भक्तों को कैसा रहता था कि पहले तो कोई माला भी नहीं था, तो एक मोटे मोटे लाल रंग के मणि एक दुकान से लेके आए, उसको फिर पिरो के काफी समय लगा कि ऐसे माला बनाए बड़े बड़े, और कोई बैग नहीं होता था बीट बैग जो, तो इसलिए अपने गले में ही धारण करते थे एक माला की तरह, और फिर वो सब मोटे मोटे मणि वैसे करके तो माला करना चालू किया था। इसी प्रकार से सैन फ्रांसिस्को में मालती माता जी और वो बुक स्टोर से एक गिफ्ट इंडियन स्टोर से जाके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की विग्रह लाए, और ऐसे जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से परिचय हुआ भक्तों का। फिर सभी भक्त ऐसे छोटे छोटे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के विग्रह लेके फिर उसको भी एक नेकलेस में जो है करके अपने गले में धारण करते थे। तो एकाग्रता के बारे में प्रभुपाद जी जो है ज्यादा जोर देते थे। जिस प्रकार से एक पत्नी है, यदि उनके पति उनको सुनते नहीं है, बस इधर से सुना अनसुना कर देते हैं, हाँ हूँ ऐसे कर देते हैं, ज्यादा जो है सुन ना ज्यादा अपना ध्यान नहीं लगा रहे हैं,
तो वो पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार से हम जब करते हैं हमें एकाग्रता चाहिए, ध्यान जो है केंद्रित होना चाहिए। इसके बारे में ज्यादा जोर दिया है प्रभुपाद जी ने। Okay. I think we're going to stop now. हाँ, तो प्रभु जी की असीम कृपा है। प्रभु जी ने हमको अपने साक्षात्कार से इस प्रकार से कितने मधुरता से ओतप्रोत किया है। तो हम प्रभु के अपने हृदय के अंतःकरण से आभारी हैं और अपने हृदय के अंतःकरण से प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस ग्रेस मुक्त्यानंद प्रभु की जय, शील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Nice to meet everyone.